Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you for class? I hope that you all will be fine by the grace of Almighty Allah. My dear students, today's our topic is poem Everyday Things. Students, when you will read this poem, you will find that it's a very interesting poem. I love to read this poem when I read this. Let's start this reading. Open your book, page number 41. Open your reading book, not your workbook. Okay? Open the page number 41. Here, can you see the board? यहाँ पर मैंने definitions लिखी हैं of some difficult words. When you will read this poem, you will find these difficult words, and these definitions will help you to understand what are these words. Okay, let's start reading. Everyday things. Everyday things, रोजमर्रा की चीजें. Millionaires, presidents, even kings. Millionaires means very rich person. ऐसे लोग जो बहुत अमीर होते हैं. Presidents, even kings. यहाँ तक के बादशाह भी. Can't get along without everyday things. रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों के इस्तेमाल के बगैर तो वो नहीं रह सकते ना. Definitely. Were you president, king or millionaire, you'd use a comb to comb your hair. Yes. चाहे आप एक बादशाह हों, एक प्रेसिडेंट हों या बहुत ज़्यादा अमीर आदमी हों, आपको अपने बालों को ब्रश करने के लिए, संवारने के लिए एक ब्रश की या एक कंघी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना. डेफिनेटली. इफ़ यू विश्ड टू बी क्लीन एंड यू वुड, आई होप, you'd take a bath with water and soap. Do you understand what's the meaning of this sentences? Yes. अगर आप नहाना चाहते हो या अपने आप को साफ करना चाहते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ या उम्मीद करती हूँ, यहाँ पर हमने देखा नहीं कि ये राइटर कौन है. Either this is a girl or this is a boy. Jean Eyre. Oh, this is a man. Jean Eyre. Jean Eyre tells us that if you wish to be clean, अगर आप साफ सुथरे होना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पानी और साबुन की मदद से, जाहिर सी बात है इसकी मदद से ही नहाएंगे. And you'd have to eat if you wanted to eat bread and vegetable, fresh and meat. अगर आपको भूख लगी है तो आप क्या खाएंगे? डेफिनेटली आप ब्रेड, वेजिटेबल्स, फिश और मीट यही खाएंगे ना. इसी से बनी हुई चीज़ें खाएंगे. इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा ना. While your drink for breakfast would probably be milk or chocolate, coffee or tea. While your drink for breakfast, चाहे वो आप अपने नाश्ते के लिए, नाश्ते के दौरान जो ड्रिंक लें, would probably mean maybe, likely यानी हो सकता है या उस जैसा हो, या हो सकता है कि वो क्या हो, मिल्क, चॉकलेट, कॉफ़ी और टी. इनमें से कुछ होगा. डेफिनेटली इनमें से कुछ होगा. You'd have to wear, you could hardly refuse. Hardly mean barely, मुश्किल से. Underclothes, outer clothes, stockings and shoes. आपको पहनने के लिए डेफिनेटली नीचे पहनने वाले कपड़े या ऊपर पहनने वाले कपड़े या स्टॉकिंग्स कहते हैं अ पेयर ऑफ क्लॉथ्स लाइक सॉक्स. ऐसे कपड़े जो आप अपनी टांगों को कस के पहनते हैं, जिसे आप टाइट्स भी बोलते हो. ठीक है, या जीन्स की पैंट्स भी कह सकते हैं जो टाइटली होती हैं, जिन्होंने आपकी लेग्स को टाइटली होल्ड किया होता है. दैट इज़ कॉल्ड स्टॉकिंग्स, अ पेयर ऑफ क्लॉथिंग्स. लेकिन हम इसको ज़्यादातर सॉक्स कहेंगे, मतलब सॉक्स के ज़िम्मे में ही आएगा ये. स्टॉकिंग्स एंड शूज़. गो टू द नेक्स्ट पेज.
If you wanted to make a reminding note, you'd take a pencil out of your coat. And you couldn't sign a letter, I think, without better than pen and ink. Definitely अगर आपको कोई नोट लिखना है तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या चाहिए होगा? Yes, पेन, पेंसिल या मार्कर, या लिखने के लिए समथिंग. तो उसने कहा कि अगर आपको खत पे साइन करने हैं तो सबसे बेस्ट क्या होगा? पेन और इंक. If you wanted to read, you'd be sure to look. अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप यकीनी तौर पर देखेंगे. Sure mean certainly, यकीनी तौर पर. At newspaper, magazine or book. And if it happened that you were ill, you down some oil or chalk on a pill. उन्होंने कहा अगर ये हो जाए, happened mean वाक़या हो जाए, रूनुमा हो जाए, come about, तो क्या होगा कि अगर आप बीमार हो जाएं तो definitely down mean finish or drink quickly, यानी आपको जो सिरप फ़ौरन से पीना होता है वो आपको कोई ड्रिंक फ़ौरन से लेनी होगी. सम ऑयल, ऑयल मीन यहाँ पर ऑयल मीन मेडिसन, ठीक है, कुछ मेडिसन. चॉक ऑन अ पिल, चॉक ऑन मीन स्वेलो या निगलना, गले से उतारना. पिल मीन टैबलेट्स, गोलियाँ जिसे कहते हैं, ठीक है. इफ़ यू हैड अ कोल्ड, आई कैन ओनली सपोज you'd use a handkerchief for your nose. उन्होंने कहा अगर आपको सर्दी लग जाए, I can only suppose, मैं इमेजिन करता हूँ या गेस करता हूँ. Suppose mean imagine, कि आपको एक हैंडकरचीफ यानी एक रुमाल चाहिए अपनी नोज़ी साफ करने के लिए. When you wanted to rest your weary head like other folks, you'd hoop into bed. Weary mean fig out. Weary mean fig out and folks mean common people, यानी अवाम. कहते हैं अगर आपका सर बहुत थका हुआ हो तो डेफिनेटली आम लोगों की तरह आपको भी बेड पर लेटकर अपना आराम करना चाहिए. Millionaires, presidents, even kings can't get along without everyday things. Here's your complete poem. Now tell me, students, do you understand anything from this poem? Do you know what is the main idea or what is the clear message in this poem? Yes, the main idea or the clear message of this poem is either we are rich or poor, we are president or a millionaire, we are king or a common person, we have to need calm everyday things. We all need everyday things. Yes, this is the main idea or this is the clear message of this poem which Jane Eyre wanted to convey. Now, I hope you understand the complete poem and it's the message. Now open your workbook, page number 14. Students, now look at the page number 14. We will start our work from the top of the page. First one is everyday things, theme of the poem. Filling the blanks, the theme of this poem is that if you are either a rich or a dash. Now look at the below of this paragraph. Here is a helping box. You can find words from here and fill these blanks. First one is the theme of the poem is that if you are either rich or poor, what you will write here? Poor. Yes, P-O-O-R, poor. Person for the needed, N-E-E-D-E-D, needed. Things no one can get away with it. The poet illustrates that the ordinary things are everyday, everyday, everyday by everyone. The rich person may have an expensive, expensive things,
but the function is same of everything. For example, to complete the everybody needs. Everyone needs water and soap, S-O-A-P, soap, food to eat, pen to write, book to read, and a place to sleep. No one can deny the need of ordinary or everyday. Got it? Okay. Next one is answer the questions. First question is, what is the main message of the poem? As I already told you, the main theme or the main clear message of this poem. Here I wrote here, look at this. The main idea of the poem is either we are rich or poor, comma, we all need everyday things. Got it? Good. Next question is for class. How are millionaires, presidents, and kings like ordinary people? Do you understand what is the meaning of this question? No? Okay, I'm going to tell you. उन्होंने पूछा है, how are millionaires, presidents, and kings किस तरह आम आदमी के जैसे होते हैं? The answer is simple. कोई सी भी उनकी एग्जाम्पल बता दें. Here, in my opinion, I write this answer. They also use a comb to comb their hair. I choose this sentence from your poem. Okay? So you can write this one also. And if you want to write another line or another sentence, you can write that. Okay? Now, next question is, name a few more things that the rich do that others also do. कुछ चीज़ों के कुछ काम ऐसे नाम लिखें जो रिच पर्सन भी करते हैं और ऑर्डिनरी पीपल भी करते हैं. In my opinion, I write here, take a bath with water, क्योंकि ये सब करते हैं, हम सब पानी के साथ ही नहाते हैं ना. Eat and drink, हम खाते भी हैं और पीते भी हैं. Wear clothes, read newspaper, etc. Okay? If you want to add some more words or some more lines, you can add it. Okay? Very good. Next question is question number 4. Now is for class, look at this question. It is a very interesting question. Okay? All rich and poor mostly have same kind of diseases. Can you match illness with its symptoms? अब जो तासुरात हमें बीमारी के नज़र आते हैं, जो सिम्टम्स हमें ज़ाहिर होते हैं, उनके ज़रिए आपने इस बीमारी का नेम पता करना है. वो यहाँ पर लिखी हुई हैं और उनके सिम्टम्स के उसके साथ मैच करना है. नाउ फर्स्ट वन है सिक. सिक को हम मैच करेंगे नंबर 4 लाइन्स. टायर्ड बॉडी हर्ट्स, 1 को हम मैच करेंगे 4 वाली लाइन के साथ. सेकेंड इज हेडेक, इसको हम करेंगे 5th लाइन के साथ. हेड हर्ट्स, कांट सिट अप. ओके. नंबर 3 इज कोल्ड. कोल्ड को हम करेंगे 1st वन के साथ. रनी नोज, टायर्ड, हेडेक, कंजेशन. ओके. नंबर 4 कफ. कफ को हम मैच करेंगे नंबर 6 के साथ. सोर थ्रोट, कफिंग, हर्ट्स टू स्वेलो. नंबर 5 फीवर. फीवर को हम करेंगे 2nd के साथ. योर बॉडी फील्स कोल्ड और वेरी हॉट, चिल्स, स्वेटिंग. लास्ट वन इज 6 को हम करेंगे 3rd लाइन के साथ. अ स्टमक, नोजिया, वॉमिटिंग, अ फीवर, मसल एच एंड चिल्स. Got it? Good. Now come to the next question. Okay, next question is question number 5. Look at your book, workbook, page number 15. How do you know you have a fever?
हाउ डू यू मेजर योर टेम्परेचर? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फीवर है? और अगर आपको फीवर है भी तो आप अपना फीवर किससे मेजर करोगे? कैसे पता चलेगा कि आपको कितना दर्जा हरारत, आपका टेम्परेचर कितना है? लेट्स सी द आंसर. नो हैविंग फीवर बाय फीलिंग हॉट और चिल्स. वी मेजर आवर फीवर बाय थर्मामीटर. हमें कैसे पता चलेगा? जब हम बहुत ज़्यादा हमारा टेम्परेचर हॉट होगा या चिल्स होगा, और फिर हम अपना फीवर किससे मेजर करेंगे? बाय थर्मामीटर. देखा है ना? यस, ऐसा होता है. ये है थर्मामीटर. दिस इज द थर्मामीटर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टर्न योर पेज of your workbook, open the page number 16. Here is the question number 6. Pick out the rhyming words from the poem. Do you know what is the meaning of rhyming words? Yes, very good. Same sound words. यानी ऐसे words जो बोलने में sound एक जैसी दें. Look at the rhyming words which I chose from your poem. The poem is Everyday Things. Okay. First one is king, thing. Same sound, king and thing. Next one is hope, soap. Ill, pill. Eat, meat. Note, coat. You can find more words from this poem by your own. Okay. Now look at the last question of this poem. Write a short summary of the poem in your own words. Students, I have already told you the main idea or the main theme of this story, of this poem. That what is in this poem, what is the actual meaning of this poem, and what is the poet, which name is Jane Eyre, wants to say with us perform this poem. Students, you will write the summary of this poem by your own. I would like this. For example, this poem, Everyday Things, has been written by Jane Eyre. He tells the importance of things that we need in our lives. He says that all human beings need everyday things. It doesn't matter whether you are rich or poor, or a president or an ordinary man. We all need basic everyday things. Got it? Just right. If you want to write this summary, you can write. Okay. Now here is your complete poem and work of the poem. I hope now you understand this poem very clearly. Students, do this work on your workbook and as well as your assessment work sheets. Okay? And learn this work also. I hope you will do this all. Okay? I know you are all very good students. Allah Hafiz, fi amanillah.